बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज टू टेस्ट 3 क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वेज ग्लेशियर्स। हमारा टॉपिक क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वे ग्लेशियर। यहाँ पे सिर्फ नॉर्वे की बात हो रही है। Well above the tree line in Norway's highest mountains, ancient fields of ice and shrinking as Earth's climate warms. And the ice has vanished, it has been giving up the triers it 6,000 years ago. Items such as ancient arrows and skis from Viking age trades and those artifacts have provided archaeologists with some surprising insights into how ancient Norwegians made their livings. हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, अब डेट्स मंथ्स ईयर्स को अंडरलाइन कर लेंगे। डेट्स मंथ्स एंड ईयर्स नाउन्स, इन सब को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। सब हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है 14 to 19 है। विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन किस सेक्शन में है। रेड द करेक्ट रेट इन बॉक्सेस 14 to 19 ऑन योर आंसर शीट। सबसे पहले है एन एक्सप्लेनेशन फॉर वेपन्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स और वेपन्स लेफ्ट बिहाइंड। पैराग्राफ डी में देख ले ज़रा। यहाँ पे है हमारा माउंटेन्स और वेपन्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। ब्रोकन एरोज, बोस। मैनी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स आर एसोसिएटेड विद हंटिंग। हंटर्स वुड हैव इजीली मिसप्लेस्ड एरोज एंड दे ऑफन डिस्कार्डेड। हमारा आंसर क्या है इसका, डी है। A reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition. Physical difficulties involved in an archaeological expedition. Physical difficulties. C में आ जाए ज़रा। Over 9 years, a team of archaeologists, which included Lars Pillow of Opland, surveyed patches of ice in Opland, an area of south central Norway that is home to some of the country's highest mountains. Reindeer once congregated on these key patches. Later summer months to escape biting insects from the slush followed. In addition, trade routes threaded through the mountain passes of Opland. Slow but steady movement of glaciers tend to destroy anything at their bases. Physical difficulties involved in archaeology. यहाँ पे क्या है, physical difficulties, biting insects, threaded through the mountain passes. हमारा आंसर क्या है इसका, सी है। An explanation of why less food may have been available. Less food. पैराग्राफ एफ में आ जाए ज़रा। हम देखेंगे फूड लेस और फूड किधर है। शॉर्ट पीरियड ऑफ डीपर देन कोल्ड फ्रॉम शॉर्ट, ये आ गया। लेस देखेंगे किधर है, इसके एंड पे आ जाए ज़रा। Though the finds from the ice may have continued through this period, perhaps it's suggesting that importance of mountain hunting increased to supplement failing agricultural harvests in times of low temperature seas berries. A colder turn in the climate would likely have meant widespread crop failures, so more people would have depended on hunting to make up for those losses. तो हमारा आंसर क्या है, क्रॉप्स फेलियर है, तो आंसर क्या है हमारा, एफ है।
A reference to the possibility of future archaeological discoveries. फ्यूचर लिखो आने वाली, फ्यूचर हम देखेंगे किधर है। अब देखें ईयर्स टू कम यहाँ पे आ गया। फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट ये भी है। Norway's mountains are probably still hiding a lot of history and prehistory in remote ice patches. हम लोग हमेशा कीवर्ड ढूंढते हैं इसके अंदर, कीवर्ड हमें मिल गया, हम इसका आंसर दे देंगे। आंसर क्या है इसका? एच। अब एग्जांपल्स ऑफ आइटम दैट वुड हैव बीन ट्रेडेड। अब देखना है कि जो ट्रेड हो रहे थे वो आइटम कौन कौन से थे। यहाँ पे क्या हुआ था, लो हो गया था। तो अब देखेंगे यहाँ पे फिर आगे ट्रेड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कमी हो गई थी हर चीज़ की। And growing Norwegian towns along with export markets would have created booming demand for hides of fight the cold as well as antlers make using things like combs. Business must have been good for hunters. Hunters के लिए business जो था वो बहुत अच्छा था। तो हमारा आंसर क्या एग्जाम्पल आइटम दैट वुड हैव बीन ट्रेडेड। जी। A reference to the pressure archaeologists are under to work quickly. प्रेशर बताएं ज़रा कौन सा है। Textiles and hides. This is because unless they are protected from the microorganisms that cause decay. In the ice cover around the world, glacial archaeologists need to raise the clock to find newly revealed artifacts, preserve them, and study them. तो हमारा आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट पहले क्वेश्चन नंबर 20 से 20 to 22। वन वर्ड ओनली, एक वर्ड यहाँ पे आपने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। Interesting finds at an archaeological site. Organic materials such as animal skins and textiles are not discovered when archaeologists they have little protection against. Animal skins और textile किधर है? ये आ गया textiles, hides और ये आ गया refined archaeological site. This is because unless they are protected from the microorganisms. आंसर क्या है हमारा? अगेंस्ट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्टेड कोई नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उन्होंने प्रोटेक्शन डायरेक्ट दे दिया, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है उसको सर्च करने की, मतलब उसका सिनोनिम ढूंढने की। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 21 to 22 है। Archaeologists have been working in the mountains in Uppland in Norway and to recover artifacts revealed by shrinking the ice cover. There were trade routes through these mountains and dash. Uppland in Norway. ये mountains and dash यहाँ पे आएगा नॉर्वे, ओपलैंड that is home to some of the country's highest mountain. Reindeer once congregated on these icy patches in their later summer months to escape biting insects and from the late Stone Age. So to some of the country's highest mountains, reindeer once congregated. आंसर क्या है हमारा? Mountains and reindeer. In the later summer. Next paragraph. Attacked by कौन attacked का था? Biting of insects. नेक्स्ट पे आ रही क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक। टू लेटर्स। विच ऑफ द फॉर स्टेटमेंट डज द राइटर मेक अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ बैरिट स्टीम? बैरिट स्टीम, बैरिट स्टीम किधर है? बैरिट स्टीम, हमें
बैट स्टीम नहीं मिला तो क्या करेंगे? ये बैलेट स्टीम आ गया. Carbon dated 153 of the artifacts and compared those dates to the timing of major environmental changes in the region, such as periods of cooling or warming, and major social and economic, such as the growth of farming settlement and the spread of industrial networks leading to Viking Age. Artifacts found the higher mountain passes were limited to skiing equipment. यहाँ पे नहीं आ रहा हमारा आंसर, क्योंकि हम लोग एक वर्ड को पढ़ते हैं हमें समझ आ जाती है इसका आंसर किधर है. नेक्स्ट पे आगे पीछे आ जाए ज़रा. विकिंग एज किधर है? इसको तो दोबारा एक दफ़ा पढ़ ले ज़रा. सॉरी, हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं. Found in the higher mountain passes were limited to skiing equipment. Hunters went into the mountains even during periods of extreme cold. The number of hunters from certain time periods are relatively low. Radiocarbon dating artifacts produce some labels were found open than at any other mountains. तो हमारा आंसर जो है ना वो इधर नहीं आ रहा. हमारा आंसर जो है वो इधर कहीं पे आ रहा है. ये extreme composed cooling, warming, major social and economic shifts, such as travel in the upper reaches of mountains extremely. Bad steam. The hunters went into mountains even during periods of extreme cold. Yeah, yeah. The periods of cooling or warming and major social economic shifts such as growth of farming settlement. They found that some periods had lot of activities which indicates that people had been pretty active in the mountains, but there were few no signs of activity during other periods. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? From certain periods were relatively low. Few are no signs of activity during these periods. ये लास्ट वाला है हमारा आंसर आ रहा है. C. Hunters went into mountains even during periods of extreme summer. B or C. Best in those dates to timing, as such as environmental changes in the region, such as cooling or warming, and major such as the growth of farming settlement and the spread of industrial trade in the Viking Age. They found that some periods had blast of artifacts to indicate that people had pretty in the mountains during these times. मतलब सर्दियों में भी वो एक्टिव होते थे. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. विकिंग एज. विकिंग एज किधर है? इधर नहीं है. नेक्स्ट वाले पेज पे चले जाते हैं. यहाँ पे देखें ज़रा. विकिंग एज. ये विकिंग एज. Which of the two statements does the writer make about the Viking Age? Hunters at the time benefited from an increased demand for goods. The beginning of the period saw the greatest growth in the wealth of Viking. Did not lie on ships allowed to transport goods. Norwegian towns and the Vikings were primarily does not. ये आ गया Viking.
ये देखिए, मैनी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स बेरिड स्टीम रिकवर्ड डाटा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द विकिंग एज 700 through to 96 trade networks connecting and with Europe and Middle East were expanding around this time. Although we usually think of ships when the think of Scandinavian expansion. हमारा आंसर क्या है? Using the Viking did not land ships alone to transport goods. सिर्फ वो अकेला ही नहीं था उसके लिए, और भी बंदे थे. नेक्स्ट पे है ज़रा लास्ट लाइन पे. The booming demand for hides to fight off the cold as well as hunters to make use like business must have been good for hunter. Benefited from the demand for goods. हमारा आंसर क्या है? ए, लास्ट वाला आंसर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गया है. ये बुक 16 का हमारा पैसेज है. टेस्ट 3 है, पैसेज 3 है. क्लाइमेट चेंज रिवील्स एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वेज ग्लेशियर. काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं.